Okay, today we are going to look at one passage which perhaps we have studied very often. Okay, that is 1 Samuel 17. Before you open to that passage, anyone knows what is there in that? आज हम Okay, आपका ट्रांसलेशन का पहले ही उत्तर आ गया। आज हम एक ऐसे भाग को देखने जा रहे हैं जिसको कई बार हमने मनन किया हुआ है, और वो है पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय, और सवाल का जवाब मिल गया है। Okay, it's a large passage, so we won't read it. एक बड़ा भाग है, इसलिए हम इसको पढ़ने वाले नहीं हैं। But I'm sure you read it during your personal devotion time, sometime or the other. Been taught in Sunday school, and many preachers would have preached on this subject as well. मैं ये मानता हूँ कि आपने अपने व्यक्तिगत मनन के दौरान इसको पढ़ा होगा, संडे स्कूल में पढ़ाया गया होगा, और कलीसिया में जब शिक्षकों ने आपको भी इसके बारे में सिखाया होगा। Okay, what is the first thought? Okay, don't look in the Bible. What is the first thought that comes in your mind when you think about this David and Goliath? Not a story, it's an incident that took place. What's the first thought that comes into your mind? पहला विचार आपके मन में क्या आता है जब आप दाऊद और गोलियत के बारे में सोचते हैं? ये एक घटना है जो इतिहास में हुआ है, तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपके विचार में पहला विचार क्या आता है? When God is with us, we don't need physical strength. Okay. यदि ट्रांसलेशन होने दो। बहन ने ऐसा कहा कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो शारीरिक सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। आप हिंदी में उत्तर दिया तो भी चलेगा, तो लेंसन भाई इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे। ओके, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे साथ है, तो परमेश्वर। If God be for us, who can be against us? पाप को बिना दया के बर्बाद किया जा सकता है। सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होती है जो मसीह में विश्वास करते हैं। If God be for us, who can be against us? That's what. हाँ? We will be victorious. ये प्रभु हमारे साथ है तो हम विजयी बनेंगे। डेविड एंड गोलियत के बारे में सुना है क्या? क्या बोला? एक गीत का लाइन उन्होंने बोला है, Why are you afraid when he is fighting for you? Okay. Victory belongs to God. Okay. विजय परमेश्वर का है। Any children want to say something? Lot of children are sitting. Children, youth. I think David was a young boy, no? Any kid wants to say something? The confidence and trust that David had in God is something which we can learn. Confidence and trust. जो भरोसा और विश्वास परमेश्वर में दाऊद का था, वो सीखने योग्य है। God uses the ordinary people for His purpose. किस प्रकार से परमेश्वर साधारण लोगों को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी हम देखते हैं। Okay. Any child wants to say something? बच्चों में से कोई बोलना चाहते हैं? This question was asked in a Sunday school. ये सवाल जो है संडे स्कूल में पूछा गया। So one child told the target was too wide to miss. एक बच्चे ने कहा जो लक्ष्य था इतना विशाल था कि वो छूट ही नहीं सकता था। And the little girl, 8-year-old girl, told Goliath should have picked someone his own age and size rather than try to mess up with a kid. Okay, एक 8 साल की बच्ची ने ऐसा कहा कि गोलियत को
अपने समान के एक मनुष्य से लड़ना चाहिए था, बच्चे से लड़ने की चेष्टा नहीं करनी थी। Okay. So anyway, today we are going to learn. Okay, like brother said something, there's a lot to learn from what we are going to say. We will learn interactively only. There is nothing great I can tell which you will not learn when you read the word yourself. आज हम इसको वार्तालाप के साथ सीखने की कोशिश करेंगे, और ऐसा कुछ बहुत बड़ा मैं नहीं बोलने वाला हूँ जो कि आप पढ़कर नहीं सीख सकते हैं। Okay. Any idea what is the background to this passage? Don't look into the Bible. Try to remember and recollect the Bible. Even just like that. इसका भूमिका क्या है, आपको कुछ याद है? What happened before that? बाइबल में मत देखो। Huh? Yeah, that is the event. Okay. Yes. Before this, before some time, before some years or whatever it is, क्या हुआ था? Saul was ordained by God. Saul was? Rejected by God. He was not. My translator was answering the question, so let him finish. Yes. Saul was ordained as a king. Saul. Yes. Okay. Many years ago. Many years ago. David was already anointed. Okay. Saul was the king. He had been anointed king. But David, remember, has already been anointed by Samuel as king. Somebody here was saying something. Yes. Saul was rejected by God since he was not obedient to God. Okay, so the sequence is good. Saul had been anointed as king, but was rejected because of the way he lived his life. And God had sent Samuel to anoint David, and this event had already taken place. शाऊल राजा बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल का तिरस्कार किया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसके बाद शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया था। Given the choice, neither David's dad, like brother spoke last Sunday, nor Samuel, initially would have thought of David as a candidate to become king. यदि चुनाव का अवसर होता तो ना ही दाऊद का पिता और ना ही शमूएल दाऊद को राजा के रूप में चुनता। Okay. So now I want you to look at the way God is beautifully building up events. Okay? Changing people's lives, changing the destiny of a nation, that is the nation of Israel. मैं उस चित्र को आपको देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, किस प्रकार से परमेश्वर घटनाक्रमों को इस प्रकार से योजित करता है कि एक मनुष्य का जीवन और साथ ही साथ एक पूरे देश का परिवर्तन हो जाता है, और वो देश है इजराइल। But don't look at it as something that took place 3000 years ago. लेकिन उसको इस प्रकार से ना देखें कि एक ऐसा घटना है जो 3000 साल पहले हुआ। Something like this is happening in our midst every day, and we are called to be people like David. कुछ इस प्रकार की घटना हमारे बीच में लगातार दिन प्रतिदिन होता आ रहा है, और हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम दाऊद के समान बने। Okay. David was not something spectacular or had high education or anything that could make him what he became, except for the fact that he trusted God, he obeyed him, and did what pleased God most in his life. दाऊद को देख करके दाऊद कोई बहुत बड़ा या बहुत पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन सिर्फ यही कि वो वही करता था जो परमेश्वर को भाता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था और वही किया करता था। And that is God's expectation. It does not change. That is God's expectation of each one of us. और यही परमेश्वर की इच्छा है और ये बदला नहीं है, हम हर एक से परमेश्वर यही चाहता है। So what was the difference between David, Saul, his brothers, and the other Israelites, or even the Philistines? तो क्या फर्क था दाऊद में, शाऊल में, उसके भाइयों में और अन्य इस्राएलियों में? All Israelites, including David, knew the scriptures, but the difference simply was someone obeyed it
The others knew it, but did nothing about it. दाऊद और इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन मालूम था। फर्क सिर्फ इतना था कि दाऊद उसको जानता था और उसको प्रायोगिक किया, बाकी लोगों ने उसको कुछ भी नहीं किया। Okay, slowly we will move through this passage and try to connect the events as we see it, okay, with our own lives. You know, you have to do it in your own mind and heart. I have done it when I studied it, this passage, and I also need to continue to do it till my death. और इस भाग से हम होकर के गुजरेंगे और अपने जीवन को टटोल करके देखेंगे और हम हर एक को अपने लिए करने की जरूरत है। Okay. The passage starts with one word, now. At least that's how the NIV starts with. I don't know about other translations, but the word starts with now. ये भाग इस प्रकार से शुरू होता है हिंदी में अब। Okay. And this word now is repeated in verse 12 also. और 12वें आयत में भी अब का इस्तेमाल किया गया है। Okay. So the present is very important to all of us. So जो अभी का जो स्थिति है हम हर एक के लिए बहुत मुख्य है। What we did many years back, you know, we may recall with pride and we may have fears about the future, but how we live the moment is important for us in the light of eternity. हम पीछे मुड़ करके कुछ बातों के बारे में आनंदित हो सकते हैं, भविष्य को देख करके हम भयभीत हो सकते हैं, लेकिन हम अभी किस प्रकार से जी रहे हैं वो बहुत मुख्य है। Okay. Like Riya said, a battle was on the air. जैसा रिया ने कहा कि युद्ध दिख रहा था, होने वाला है। Okay. The Philistines gathered, the Israelites gathered. फिलिस्ती इकट्ठे हो चुके थे, इजरायली इकट्ठे हो चुके थे। Okay. When you look at this passage, one of the things that some words in the Bible will come pop out, you know, when you look at this battle that is developing. और इस भाग को आप देखेंगे तो कुछ शब्द निकल कर के आएगा जो आप देख पाएंगे। The Philistines were enemies of the Israelites. जो फिलिस्ती है वो इस्राएलियों के शत्रु थे। Look at the words that are used. Gathered their forces for war. You know, gathered. I'll just mention all the words, then you can translate it. Gathered their forces for war. They pitched, they assembled at Soko. Assembled. Okay. They gathered, they assembled. Then they pitched camp. Okay. वो इकट्ठा हुए, वो एक हो गए और अपने डेरे को डाला। ये तीन मुख्य बात शब्द है। So when you look at that, what does it tell you? Because the Bible doesn't tell anything extra, it doesn't tell anything less. So what does it tell you about the war that was going to take place? और बाइबल जो है कुछ अधिक या कुछ कम नहीं बताता है। जब आप इसको देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? They were prepared for war. वो युद्ध के लिए तैयार थे। Any other thing? Long war. Who said that? Yeah, long war. They were prepared. Why? Why did you say that? They pitched camp. They pitched their tents. Okay, the battle was not going to be something short. They came prepared for war, and they came with equipment to equipped with equipment for a long drawn war. और वो युद्ध के लिए तो आए, पर युद्ध की ऐसी तैयारी करके आए थे ये समझते हुए कि ये लंबा चलने वाला है, और उसके लिए जो कुछ भी सामग्री की जरूरत थी वो लेकर के आए थे। And they gathered their forces. You know, it was a large army, and it was with good military equipment, trained soldiers. They had come to win. और अपनी सेनाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और जो उसके युद्ध की जो सामग्री थी वो लेकर के आए। अपने उनके सैनिक एकदम तैयार थे और वो विजयी होने के लिए आए थे। Okay. On the other side, okay, these people came on one hill. On the other side, the Israelites came. So, what do we understand by that? You know, any thoughts come to your mind? The Israelites also came. Saul came. His soldiers came. They came to the other hill. एक भाग में ये फिलिस्ती आए, एक भाग में इजराइली आए, शाऊल आया, उसकी सेना आए।
तो आपके मन में क्या आता है, विचार आता है? Huh? Both are prepared for war. Okay, so the enemy was ready, and the Israelites were also prepared for war. They had come to fight. No? They did not come to surrender. दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। एक तरफ शत्रु था, एक तरफ इस्राएली थे। वो युद्ध के लिए तैयार थे, वो अपने आप को उनके अधीन करने के लिए तैयार नहीं थे। Okay. Now, when you look at us as believers, what does the Bible tell about us? जब हम अपने आप को विश्वासियों के रूप में देखते हैं तो बाइबल हमारे बारे में क्या बताता है? Somebody was saying something. We have a war. Okay, we have a war going on against Enemies. the enemy is Satan and his cohorts. There is a war. Whether you like it or not, the war has been declared, and we are in the midst of war. यदि आपको पसंद आए या ना आए, युद्ध तो घोषित कर दिया गया और हम युद्ध के बीच में हैं। And in war, what happens? और युद्ध में क्या होता है? You don't bother about your enemy, no? आप Only your team, your people you may care for. But if the enemy is there, he is wounded also, people will try to make him even more hurt and worse. युद्ध में कैसा है कि आप शत्रु के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते, भले ही शत्रु गिर गया हो, लेकिन और उसको और पीड़ा देने का ही कोशिश करते हैं। Okay, so the Bible says your enemy, the devil, is prowling like a roaring lion, और बाइबल waiting for someone to devour. बाइबल ये बताता है कि हमारा जो शत्रु शैतान है, शेर के माफिक हमारे पीछे है और किसी को खाने के फिराक में लगा हुआ है। And battles are always dangerous, and there are always casualties. और युद्ध हमेशा खतरनाक होता है और उसमें मृत्यु भी होता है। Okay, on TV you would have seen lions or tigers or hyenas or wild dogs hunt. आपने टीवी में शेर, बाघ, हायना और जो जंगली कुत्ते हैं उनको शिकार करते हुए देखा होगा। Whom did they attack? उन्होंने किस पर आक्रमण किया? Weakest. अपने से जो कमजोर है उन पर आक्रमण करते हैं। The baby that is born. जो शिशु है जिसका जन्म हुआ है। The older animals. जो बड़े हुए जानवर हैं। Or the injured. या फिर जो बीमार है। So when we think of spiritual warfare, remember there are people who are weak, believers who are weak, okay, and who are just born into the family, okay. Then there are many others who are old but distressed and can't stand on their own, and they need someone to strengthen them, okay. And the enemy will try to pick them first because it is easy fodder. और जब हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो नवजात है, शिशु है, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बढ़ गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़े तो हो गए हैं पर भीतर से एकदम व्याकुल है। Okay, now in verse 4 we are told that Goliath came forward. और चौथे अध्याय में बताया गया है कि गोलियत जो है बाहर आया या बाहर निकल करके आया। Situation was tense and bad, but to make things worse, a giant stood up and came forward. परिस्थिति तो गंभीर था, लेकिन उस स्थिति को और बिगाड़ने के लिए एक दानव बाहर निकल करके आया। Okay, and so that we understand, his height was 9 feet 9 inches. ताकि हम समझ सके उसका जो हाइट है वो 9 फीट 9 इंच का था। Brother, how tall is your house? 10. Okay, so he must have been almost hitting the roof. Okay, just put your 10 फीट इस घर की ऊंचाई है, तो गोलियत ऑलमोस्ट इतना तक पहुंचता है। Okay, and he had a coat of mail, that is coat of scales, like fish scales, no? There was something that he wore to protect himself, and that weighed around 58 kilograms. और वो अपने ऊपर एक मछली का जो छाल होता है उस प्रकार का कुछ पहना था, जिसका वजन जो है 58 किलो था। Okay, it's good to convert the units which are given in your Bible to
figures that you can understand. बाइबल में जो क्रम दिए गए हैं उसको अपने हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें उस क्रम में बदल लेना अच्छा है ताकि हमको समझ में आए. Apart from this, he wore a bronze helmet and he had brass coverings for his legs. और इतना ही नहीं, उसने पीतल का सिर का कवर पहना हुआ था और तांबे का पैर में पहना था. And he had a spear whose tip was weighing 6.9 kilos, that is almost 7 kilos. और उसका जो भाला था, भाला का जो सामने का जो भाग था वो लगभग 7 किलो का था. Okay, so that was the opponent who stood up during this war. और इस युद्ध में जो शत्रु जो खड़ा हुआ उसका विवरण इस प्रकार से. We traveled to native place and sometimes by flight on office work. You know, our airlines is kind enough to restrict the weight that we carry to 15 plus 7, and 22 kilos. But imagine this guy carrying this lot of weight of equipment and things on his body and being able to fight. Imagine the strength that he would have had. इस मनुष्य का सामर्थ्य के बारे में जरा विचार करके देखिए. इतना सब कुछ अपने शरीर में लगाने के बाद भी वो चल पाता है और युद्ध करने के लिए तैयार है. With 22 kilos in our hand, we can't get past the staircase, and we need elevators or escalators to take us to the other side. But this man was battle ready with that much protection. हम जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, अपनी कंपनियों के काम से जाते हैं, तो हवाई जहाज वाले 15 किलो चेक इन में और 7 किलो हाथ में अनुमति देते हैं, मतलब 22 किलो. वो 22 किलो भी उठा करके हमसे चला नहीं जाता है, लेकिन ये मनुष्य इतना सब कुछ पहनने के बावजूद भी युद्ध के लिए तैयार था. So this challenge during a battle and a giant came up suddenly. No one was expecting it. कोई भी इसके बारे में प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन ये शत्रु और उसका प्रगटीकरण अचानक से हो गया. Challenges in our life come suddenly like that. Okay, and we are faced with giant situations. और हमारे जीवन में भी चुनौतियां इस प्रकार से ही आती है और हम ऐसे दानव रूपी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. About 17 years back, 18 years back, my company closed down. I lost my job. Okay, and it was a giant of a situation which we came to know about just months before, just a couple of months or few months before the factory closed down. 17-18 साल पहले एक दानव रूपी परिस्थिति हमारे सामने भी आया जब मैं जिस कंपनी में काम करता था वो बंद हो गया और कुछ ही महीने पहले हमको पता चला कि ये बंद होने वाला है. Okay, that was after 16 years of working there, 16 to 17 years. और ये तब हुआ जब मैं 16-17 साल वहां पे काम कर चुका था. Okay, then I remember the first day at work in the factory that in the company that I worked in, Paros Welcome. और मैंने फिर उस पहले दिवस को याद किया जब मैं इस कंपनी में आया था. Okay, and I was just fresh from college. और मैं कॉलेज से जस्ट निकला ही था. And my boss took me around the department to introduce me to the workers. I am in production, so I need to deal with workers. और मेरा जो बॉस था वहाँ पे जो लोग कार्यान्वित थे उनसे मिलने के लिए मुझे लेकर के गया. Okay, one huge guy, a giant. एक बहुत बड़ा मनुष्य वहाँ पे था. He took me aside little bit when my boss was talking to someone else. मेरा बॉस जब दूसरों से बातें कर रहा था तो ये मुझे थोड़ा अलग लेकर के गया. Those were days when the Shiv Sena tiger was roaring in Bombay. और ये वो दिन होते थे जब शिवसेना का जो बाघ है उस समय बहुत भयंकर रूप से कार्यान्वित था. Okay, and he told me, और उसने so you have Bible studies in your house. और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में बाइबल का अध्ययन होता है. Okay, I had no idea. This was my first day at work. How he got the information, I don't know. But I was petrified. Okay, I asked him who he is. He said, I am a Shiv Sainik and I have connections with a Shaka in Mulund East. Mulund is the place where I live. और मैं
मुझे समझ में नहीं आया कुछ, कैसे उसको पता चला। मेरा पहला दिन है वहां पर, और मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने बोला कि मैं शिव सैनिक हूँ, और मेरा मुलुंड में एक शाखा है, और मैं मुलुंड में रहता था उस वक्त। Okay. So giants come up when you don't want it. और दानव उस समय आते हैं जब आप नहीं चाहते हैं। When our first child was born or conceived rather, जब हमारा पहला बच्चा गर्भ में था, Sudha was having a mild fever and we went to the doctor to test whether she is pregnant. और बहन को हल्का बुखार था, और हम डॉक्टर के पास गए चेक करने के लिए कि क्या वो गर्भ धारण करी है। So he prescribed the test which we had to do, but because she had a fever, he also prescribed certain other tests that we had to do. उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए बोला, क्योंकि बुखार था तो कुछ और भी टेस्ट करने के लिए बोला। So when the reports came the next day, we went to the doctor. और जब रिपोर्ट आया तो हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए। She was pregnant. वो गर्भ धारण कर चुकी थी, but she was also infected with malaria falciparum. और उसके साथ साथ उनको मलेरिया भी हुआ था। Okay, as a pharmacist, I knew the devastating effect of medicine for malaria, especially the falciparum type. और फार्मासिस्ट होने के नाते मुझे मलेरिया और फैल्सीपारम टाइप के मलेरिया का जो इस गर्भ के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है दवाई के कारण, मैं उसको भली भांति समझता था। Okay, a giant stood up and the doctor told, first we are treating your wife, then we will tell you what to do with the pregnancy. एक दानव खड़ा हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले हम आपके पत्नी का इलाज करेंगे और उसके बाद गर्भ का क्या करना है हम देखेंगे। He advised us abortion, but God gave us the grace to tell him that we would continue with the pregnancy because we believe life comes from God and only God can decide when to take it. और उसने डॉक्टर ने हमें बोला कि गर्भ को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन हमको परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया कि हम डॉक्टर को बता सके कि जीवन जो है परमेश्वर की ओर से आता है और जीवन लेने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। We changed the doctor and later on Joshua was born. Fully normal. Okay, and the doctors had told us to abort him. और हमने डॉक्टर को बदल दिया और बाद में जोशुआ का जन्म हुआ और पूर्णतः स्वस्थ एक बच्चा जन्म लिया। Okay, when I look back at my life, and I'm sure when you look back at your life, you will see many giants that stood up, and God gave you the grace to face him. और जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ पीछे मुड़ करके, जब आप अपने जीवन को आप देखेंगे तो आप ऐसे बड़े बड़े दानव को आप देखेंगे और कैसे परमेश्वर ने अपना अनुग्रह को दिया ताकि आप इससे लड़ सके। Okay, then verse 8 onwards, Goliath stood up and shouted to the ranks of Israel, why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us. और 8वें आयत में गोलियत ये कहता है, वो खड़ा होकर इस्राएली पंथियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। Okay. Then he continued. This day I defy the armies of Israel. Give me a man and let us fight each other. On hearing this, the Philistines' words, Saul and all the armies were dismayed and terrified. मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। अब फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। Okay.
His challenge was, I defy the armies of God. और उसका ललकार ये था कि मैं परमेश्वर के सेनाओं को नकारता हूँ. Okay. Just a few other things I want you to see. Verse 11, okay, the reaction of the Israelites and King Saul to the challenge. और ये जो चुनौती सामने आया उसका रिएक्शन किस प्रकार से शाऊल और उसकी सेना का था वो हम देखते हैं 11वें आयत में. Okay, on hearing the Philistine, okay, the first thing they did was they heard the Philistine. और ये फिलिस्ती को सुनने के बाद सबसे पहला चीज उन्होंने सुना. Then in verse 24, whenever the Israelites saw the man, they all fled from him in great fear. और 24वां आयत में जब भी वो पुरुष को देखते थे तो इस्राएली अत्यंत भय खाकर के उसके सामने से भाग जाते थे. Then they talked to each other and heard each other. In verse 25 it says, they spoke together saying, do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. और वो आपस में बात करने लगे कि क्या तुम देख रहे हो कैसे ये हमें हराने के लिए आ खड़ा हुआ है. So they saw, they heard, they talked to each other, and what came in their heart? Fear and dismay, and they fled. उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, अपने बीच में वार्तालाप किया और क्या हुआ? वो भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए. Okay, so now this is the scene. Who was the best suited person to fight against Goliath? अब ये परिस्थिति है और गोलियत से लड़ने के लिए सबसे सही मनुष्य कौन था उस समय? Saul. Okay, my translator says Saul. Okay, so is he right? Why? He was also tall. He was head and shoulder above other Israelites. और सारे इस्राएलियों में सबसे लंबा जो था वो शाऊल ही था. I'm sure he must have pulled himself down a little bit so that he didn't stand out like a sore thumb. मैं ये मानता हूँ कि अपने आप को थोड़ा झुका लिया होगा ताकि लोगों के बीच में वो कितना लंबा था दिख न जाए. What about the other soldiers? और बाकी सैनिकों का क्या? They were trained for warfare. उनको तो युद्ध के लिए तैयार किया गया था. Many of them had fought battles. और उनमें से कईयों ने युद्ध में लड़ाई भी करी है. And they had the equipment that was necessary. Swords, spears, helmets, shields, everything they had. और उसके लिए युद्ध के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब उनके पास था. But they did nothing about it. लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. Because they saw, they heard, they talked with their friends, and they got dismayed and fearful. क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, अपने मित्रों से बात करी और वो डर गए. Isn't that the way it is with us? क्या ये हमारे साथ भी नहीं हो रहा है? Aren't we afraid more than necessary simply because we see things in the TV or in WhatsApp, we hear things and then we talk amongst ourselves and we increase each other's fear so that we can't do anything at all that needs to be done. क्या हमारे अभी हालत ऐसा नहीं है जहाँ पे कि हम टीवी में व्हाट्सएप में कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, अपने एक दूसरे में बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को भयभीत कर रहे हैं और इतना तक कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं जो कि करना चाहिए. Okay. So entering the scene is another person, that is David. अब इस परिस्थिति में एक मनुष्य आ रहा है जो कि दाऊद है. For every Goliath, God has raised up David. हर एक गोलियत के लिए परमेश्वर ने एक दाऊद को नियुक्त किया हुआ है. Don't forget Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, okay, Paul, then Stephen, and the many others who have lived and got martyred even for believing and taking a stand against giants. शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, पौलुस, स्टेफनोस, इनको ना भूले जिन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े हुए और कुछ परमेश्वर के लिए अपने प्राण को भी दे दिए. Okay, some are easy to spot like that. Okay, but even in modern times, so many believers are taking a stand, paying a big price, but they stand up as David against Goliath. कुछ लोग दिखते हैं लेकिन आज के युग में भी ऐसे बहुत है
जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं और बहुत बड़ा दाम चुका रहे हैं। At the beginning, we painted a picture of how David had been anointed as king. हमने शुरुआत में उस चित्र को देखा कि कैसे दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया गया था। Was there any other interaction between David and Saul before this battle? इस युद्ध के पहले दाऊद और शाऊल के बीच में कोई और वार्तालाप हुआ था? Someone said yes, someone said no here. Who said yes? Yeah. Because when God said the Holy Spirit on Saul, Right, brother. David was Okay. When after that incident where Saul disobeyed, the Holy Spirit departed from Saul, and an evil spirit from the Lord bothered Saul, and his servants told him, "Get someone to play good music with a harp, and you will find relief." And so someone told about David, son of Jesse, who is a mighty warrior. Okay, that's the way the verse goes. Okay, and that means a brave man, a fighting man. Okay, and he is good with the harp. Get him, and it will be good for you. इस घटना से पहले शाऊल और दाऊद का मुलाकात हुआ था। जब परमेश्वर ने शाऊल को तिरस्कार कर दिया तो पवित्र आत्मा शाऊल से निकल गया और परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा को भेजा जो शाऊल को परेशान किया करता था। और किसी ने, उसके सैनिकों में से किसी ने बताया कि किसी ऐसे को बुलाओ जो आपका हिंदी क्या है? वीणा? नहीं, वीणा तो नहीं है। जो हार्प बजा सकता है। एंड उसके सैनिकों ने बताया कि दाऊद का नाम का एक बालक है जो कि योद्धा है, शक्तिशाली है और वो हार्प बजाता भी है, आप उसको बुला लो। And the previous chapter ends with David moving back and forth whenever he was needed. And in this passage also, it says, but in verse 15, David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. और हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि दाऊद आगे पीछे करता रहा, जैसे जरूरत था वो शाऊल के पास आता था, वापस अपने घर चला जाता था और अपने पिता के जो भेड़ थे उसका देखभाली करता था। So three elder brothers, the first three, they were soldiers, and the youngest was a musician who was in the courts. In those days, they didn't have recorded music, so he had to go and play in the presence of the king. और दाऊद के जो बड़े वाले तीन भाई थे वो सैनिक थे और इस शाऊल के सेना में थे, लेकिन जो सबसे छोटा दाऊद था वो तो गाना बजाने वाला था और वो शाऊल के महल में जाकर के हार्प बजाया करता था। उस जमाने में हमें इस प्रकार से जैसा रिकॉर्डेड म्यूजिक गाना मिलता है उस जमाने में नहीं था और लोगों को बजाना और गाना पड़ता था। Okay, when the incident takes place, okay, Saul asked, "Who is this lad who has come here?" That means he had never recognized. He counted David as nothing, even though he came and played music whenever he had desperate need. Yet he had no idea who this fellow was. For him, David was insignificant. जब गोलियत के सामने दाऊद आता है तो शाऊल लोगों से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। याद कीजिए कि ये वही बच्चा है जो शाऊल के सामने जाकर के जब शाऊल को अत्यधिक जरूरत था तब उसके लिए ये हार्प को बजाता था, लेकिन शाऊल के सामने दाऊद की कोई महत्व नहीं था और वो उसको एकदम ना के बराबर ही गिना करता था, इसलिए उसको नहीं पहचाना। Okay, I'm telling this specifically, okay, because as young people and people in the corporate world, working in offices, we have a feeling our boss has not recognized us, and we are not given importance. We are not placed in, we are being treated as dirt, okay, and no one knows who we are, and we feel discouraged and disappointed. मैं जवानों को ये बताना चाहता हूँ और जो ऑफिस में काम करते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि आपका बॉस आपको जो जरूरत का जो स्थान है या आप जिसके लायक है आपको वो स्थान नहीं देता, वो मान नहीं देता, आपको एकदम ना के बराबर गिनता है, ऐसा हो सकता है।
Okay? But the Bible says we don't have to worry about these things because our promotions come from the Lord. लेकिन बाइबल हमें ये याद दिलाता है कि हमें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रगति है, बढ़ोतरी है, वो परमेश्वर से आता है। Okay. So here in the next step, David was going to be elevated from being a nobody in Israel to becoming recognized by all in Israel. और ये अब ऐसा स्थिति आ गया है जहां पर दाऊद, जो कि इजराइल में कुछ भी नहीं था, अब इजरायली और सभी लोगों के बीच में कुछ बनने वाला है। Okay. Who had chosen him for the task? और इस कार्य के लिए किसने उसको चुना था? Who? God had chosen. परमेश्वर ने ही उसको चुना था। It is he who sent this prophet to anoint him. परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा था। Brother keeps asking many times, whether we know the purpose for our life. God has created us with a purpose. भाई कई बार हमसे पूछते हैं कि क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हैं? परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। God had created David with a purpose. परमेश्वर ने दाऊद को एक उद्देश्य के साथ रचा था। David didn't have to try things to become somebody in Israel. दाऊद को खुद से कुछ करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं इस्राएल में कुछ बनने के लिए। He would have miserably failed. यदि वो करता तो भयानक रूप से हार जाता। But God did what was necessary at the right time to lift him from where he was to what he would ultimately become. लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर वो किया जो कि जरूरत था, जहां से उसको उठा के बड़े ऊंचे स्थान पर बैठा सके। Okay. So his father suddenly got an idea. Let me send my son, the youngest, to the battlefront to give something to eat to my eldest sons who are serving there, and to the commander who is overseeing them, so that they have good favor, in that place. So his father has some ulterior motives, and he sends his son to the battlefield. और दाऊद के पिता को अचानक से ये दिमाग में आया कि मैं अपने बच्चे दाऊद को उस युद्ध के स्थान में भेजता हूँ जहाँ पे उसके 3 बेटे और हैं, ताकि उनको कुछ खाने पीने का व्यवस्था सामग्री दिया जाए, और साथ ही साथ उनका जो कमांडर है उसको भी कुछ दिया जाए, ताकि इन दोनों के बीच का संबंध बना रहे। Okay, but God brings David to the scene. लेकिन परमेश्वर दाऊद को इस चित्र में लेकर के आता है। And what a morning it was! और कैसा सुबह था वो! When he came to the battlefront, Goliath came out. जब वो युद्ध के क्षेत्र में आया तो गोलियत निकल करके आया। And the entire Philistine army came to its front. और पूरी जो फलिस्ती सेना थी वो सामने निकल करके आई। And the Israelite soldiers also ran to the front, and the Bible says they shouted their battle cry. And इस्राएली भी पूरे भाग करके निकल करके बाहर आए और उन्होंने युद्ध की घोषणा की। Okay, and they stood there, and Goliath told what he had to tell. And the Bible says in verse 16 that this was going on for 40 days. और ऐसा जो है बाइबल बताता है कि 40 दिनों तक चल रहा था। Okay. So David listened what Goliath had to say. दाऊद ने सुना गोलियत ने क्या कहा। Okay. Then there is something interesting, and some theologians have some weird ideas which I got to know when I tried to look at some expositions on this chapter. और कुछ रुचिकर बातें हैं और कुछ जो बाइबल के जानकार है उनका समझ मैं जान पाया अभी जब मैं इसके बारे में सीख रहा था। So David asked some of the people, what is it that the king is going to give to someone who will kill Goliath? दाऊद ने लोगों से पूछा कि राजा जो है जो मनुष्य इस गोलियत को मारेगा उसको क्या देगा। Okay, verse 30. Again he brings up the issue. He turned away to someone else and brought up the same matter, and the men answered him as before. और फिर से उसने लोगों से पूछा
कि राजा क्या देने वाला है जो गोलियत को मारेगा, और लोगों ने पहले जैसा ही जवाब दिया। Okay, so why do you think David was asking about the rewards? आपको क्या लगता है दाऊद क्यों जो तोहफा क्या मिलने वाला है उसके बारे में क्यों पूछ रहा था? Huh? He is sure he can win. Okay. Because he is the hero now. Huh? He is already anointed. Yeah. So obviously the kingdom will pass over from Saul to Him. so he knows it. So how to become a hero of a king? Okay. जॉन भाई ने कहा कि विजय निश्चित है, वो जानता था। इलंगोम भाई ने बोला कि क्योंकि वो अब राजा के रूप में अभिषेक किया गया था, तो ये समय था कि उसको ऐसा लग रहा था कि राज्य मेरे हाथ में मिल जाएगा। What do you think? Any other opinions? और कोई विचार? Huh? He wanted to be good in the eyes of Saul by accepting his reward by killing. That way you think. Okay. Any other thought? जो हमें मिलना होता है, हमें मालूम रहता है कि हमें मिलने वाला है, उससे हम बाकी चीजों से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि हमें खुशी होता है। तो अच्छा है क्या बुरा है? हाँ, अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हमें क्या मिलने वाला है, Okay. जिसके बारे में हम श्योर होते हैं, जिससे हम श्योर होते हैं। मिलने वाला होता है, हाँ, वो हम बार-बार reaffirm होता है। बार-बार जानने की कोशिश करते हैं, परिचय की। Okay. You can translate if you want. I think people will understand. Someone else was saying. Huh? हाँ, चलिए, complete करना। Okay. Peter asked, "No, we left everything to follow you. What is there for us in this?" It's like that, sister is saying. Any other thought? Okay, so he wants to know how much he will get. I'm asking because of that. Many times when we go for interviews and all, ना, हम वही पूछते हैं ना, और क्या पूछते हैं? कितना है? We change jobs और कुछ पूछता नहीं हम लोग. So easy. What is it? Because when we compare Goliath with them, just mismatching. When we put the Holy Spirit on otherwise he said, doing this next time, Yeah, that I agree. But brother, I'm asking about this question. He's asking what is the reward that the king will give? this more Okay, because I'm asking because we need to know. Maybe we never noticed it. I didn't notice it. Till I read that commentary, and I was startled, so I had to think again. He may be a thankful that king will resign and he will. Acha, he may. Which king resigns? Saul. Any king resigned on the earth till now to make way for someone else from early history till now? He was confident that God is with him and he will Okay. वो इस सुनिश्चितता की परमेश्वर उसके साथ है और वो विजयी हो जाएगा। किसी प्रकार से उसको नाम बनाना था। Okay, that's how one commentator also went. He told, so that startled me. Well, David is referred to as a man after God's own heart. Okay, no doubt he did a lot of mistakes. He murdered, he committed adultery. He did things just like us. He counted when he should not have. He did mistakes. But was this greed that was driving him to take on Goliath? Was something that I needed to answer. Then I read. Yeah, you can first. दाऊद को परमेश्वर के हृदय के स्वरूप, मैन आफ्टर गॉड्स हृदय के अनुसार वाला मनुष्य बताया गया है। हाँ, ये सही है कि दाऊद ने बहुत सारे पाप किए, गलतियां की, वध किया, व्यभिचार किया, लोगों की गिनती की जब नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ किया। लेकिन क्या यहाँ पे ग्रीड लालच था जो दाऊद को ये सवाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है? So you read verse 26, then you get an idea of what was going on in his mind. 26वां आयत को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा था। You can read it in तब Hindi. दाऊद ने उन पुरुषों से जो उनके आसपास खड़े थे पूछा,
कि जो उस फलिस्ती को मार के इसराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, इसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित फलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। Okay. So what was bothering David was, who is this uncircumcised Philistine that he can dare to defy the armies of the living God? दाऊद को ये परेशान करा था कि ये खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। He was actually shocked that the king had to offer his own daughter to prod, to motivate, to go and fight. That was the shock. What is this offer that is going on? और Okay. दाऊद इस बात को सुनकर के एकदम अचंभित हुआ कि राजा को खुद की बेटी को देना पड़ रहा है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जाकर के लड़े और इसको मारे। They were soldiers who were supposed to fight, and why did they need? They were getting a salary, already from the king. Why did they need an additional reward to be announced so that they will do what they are supposed to be doing? वो तो सैनिक थे और उनका काम था, लेकिन क्या जरूरत थी एक और उसके साथ में उनको उसके लिए तनख्वाह मिलती थी और उसके साथ में कुछ और देने की क्या जरूरत थी उनको उनका खुद का काम करने के लिए? His mind could not comprehend it that so many of them were there and not one of them was getting up and going. And the least soldier, had he picked up his sword and gone, he would have come out winner. That was the thought that was bothering him, and he wanted to confirm, is this really what is being offered by the king? He couldn't get his mind off it. और ये सारे सैनिक वहां पर है और उनमें से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, और यही उसको चिंतित कर रहा था कि यदि इसमें से छोटा सा भी सैनिक यदि अपने तलवार को लेकर के खड़ा हो जाता तो वो विजयी होता, लेकिन क्यों राजा को इतना बड़ा ऑफर देने की जरूरत पड़ रही है? Okay, he was not looking for the reward. वो उस इनाम को नहीं देख रहा था। There was time when Saul would come into a cave in which David was hiding, helpless. He would take a piece of his garment but not touch him because he was the Lord's anointed. और वो समय आता है भविष्य में जब शाऊल दाऊद जिस गुफा में था वहां पर आता है और शाऊल के वस्त्र का एक भाग को दाऊद काट के रखता है, लेकिन वो उस शाऊल को कुछ भी नहीं करता है क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। He was furious about the people who killed Saul in the end. अंत में शाऊल का वध जिसने किया उनके प्रति एकदम गुस्सा हो गया था दाऊद, हम पढ़ते हैं। David knew that if God called him, then God will find a way for raising him to the top. But he was not going to assist God to become what God had planned for him in his life. दाऊद इस बात को पूर्णतः जानता था या मानता था कि यदि परमेश्वर ने उसे चुना है तो परमेश्वर उस स्थान में उसको पहुंचाएगा, लेकिन वो परमेश्वर का कुछ इसके लिए कुछ मदद करने के लिए करना नहीं चाहता था। Okay, I can tell that from my own life. मेरे जीवन से भी मैं ये कह सकता हूँ। After I finished pharmacy, unlike Linson, I didn't join marketing. I didn't join R&D. Okay, because I would have to be with the intellectuals, the big people, and I thought I was too less to even mingle, mix, talk, or even have the grace to be like them. जब मैं मेरे फार्मेसी की पढ़ाई के बाद मैं मार्केटिंग में या R&D में नहीं गया, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा छोटा समझता था कि मैं उस प्रकार के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके प्रकार बोल करके बातें करके शायद मैं ना रह पाऊं। Okay, I am not telling that those who are there. That is how I thought. My mind worked like that. So I joined in the factory because workers who are simple people, who will talk guttural Hindi, I can be with them. They would be equal with me करके। और इसलिए मैंने फैक्ट्री ज्वाइन कर लिया क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो साधारण हिंदी बोलते हैं, उनके साथ मैं रह पाऊंगा। Okay, but today I had the plant. लेकिन आज मैं उस फैक्ट्री का सबसे श्रेष्ठ पद पे हूँ। I never tried. My salary is not very high. Okay, never asked for a promotion, never asked for an increment, never begged
never pleaded my case with any boss, okay, that I have been treated unfairly or given less than what I deserve, okay. None of those I did, but God lifted me to the place where I am today. I'm just 4 months away from retirement, so I can testify, like David did, that our God is faithful, good, and He will accomplish what He planned for our lives. We don't have to assist Him. मेरी तनख्वाह कम थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने बॉस को इसके बारे में नहीं बताया। मैंने कभी भी अपने प्रमोशन के बारे में उनसे चर्चा नहीं की। मैंने कभी भी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं करी। लेकिन मैं अपने जीवन को मैं अपने रिटायरमेंट से सिर्फ 4 महीने दूर, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए जो विचार किया है उसको पूर्ण करने के लिए वो सामर्थी है। Just a few thoughts and I'll wind up. कुछ और विचार बोल करके मैं समाप्त करता हूँ। Verse 32. 32वां आयत। David is before Saul. Saul got the news that there is a lad who wants to fight with Goliath. दाऊद शाऊल के सामने है। शाऊल को एक खबर मिला कि एक लड़का है जो युद्ध करने के लिए तैयार है। Look at the way he addresses Saul. और किस प्रकार से वो शाऊल को ना बुलाता है, आप देखिए। Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। He didn't humiliate Saul. He didn't humiliate the other Israelites. He said, I will go, okay, and I will fight your servant. You know, he doesn't tell of himself as someone big. He said, your servant will go and do it. दाऊद ने ना ही राजा का मजाक उड़ाया, ना ही सैनिकों का मजाक उड़ाया, पर कहता है कि मैं तुम्हारा दास। वो अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहा था, पर कहता है कि मैं तुम्हारा दास जाकर के लड़ेगा। Okay, and there were many who discouraged him. और वहां पर बहुत थे जिन्होंने उसको हतोत्साहित किया। There are many who will discourage you from becoming what God wants you to become. और ऐसे बहुत है जो आपको हतोत्साहित करेंगे ताकि आप वो ना बने जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। I told you the example of myself. No, I thought this is how people are, or this is how it will be, and I hid myself. Okay? और जैसा मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने सोचा, मैंने विचारा कि इस प्रकार के लोग हैं, और मैंने अपने आप को छुपा लिया। Okay, but in David's case, there were 3 at least who discouraged him, and we are told about it. और दाऊद के संदर्भ में ऐसे 3 हैं जिन्होंने उसको हतोत्साहित किया, और हमें उसके बारे में बताया गया है। His elder brother Eliab, उसका बड़ा भाई एलियाब, he said, मस्ती मजाक देखने के लिए बैटलफील्ड को आया है तुम। तो उसने कहा कि तुम you have come to the battlefield to look at fun and frolic. Thank you, Raj. Okay. Then Saul discouraged him. और फिर शाऊल ने उसको हतोत्साहित He किया। said, "You're just a little boy. उसने कहा कि तुम तो एक छोटे बालक हो। Goliath is a soldier who's been fighting from his youth." और गोलियत जो है एक सैनिक है जो अपने जवानी से लड़ता आया है। Third, तीसरा, Goliath discouraged him. गोलियत ने भी उसको हतोत्साहित किया। He said, "I'll chop you, I'll kill you, I'll give you to the birds of the field. You know, who are you? Itna small lad, you know." He despised him, the Bible says. अब उसने उसको तुच्छ समझा और कहा कि मैं तुझे काट करके यहाँ के जो बर्ड्स है उसको खिला दूंगा, पक्षियों को खिला दूंगा। So in your life also, you will have people who discourage you. आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। Your family, आपका परिवार, people you respect as leaders, जिसका आप आदर करते हैं लीडर के रूप में, नेता के रूप में, your enemy, आपका शत्रु, they all will try to make you insignificant, destroy you, so that you don't accomplish what God wants you to वो accomplish. सब आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे ताकि आप उस उद्देश्य को पूरा ना कर सके जो परमेश्वर चाहता है। Okay, so the king gave him his equipment. राजा ने अपना पूरा जो सामग्री है दाऊद को दिया। But David wore it first. Then he was polite enough to say, "I can't move around with this." और पहले तो दाऊद पहना, लेकिन बाद में बोला कि मैं तो चल भी ना पाऊंगा इसको पहन करके। Okay, so he took it off. और उसने उसको उतार लिया। He picked up 5 smooth stones, उसने चिकने 5 पत्थरों को लिया, put it in his bag,
अपने बैग में डाला He took a sling. और अपने कोफन को उठाया He took a staff. और अपने लाठी को लिया And he went. और वो गया। The Bible says Goliath marched forward to face him. और बाइबल ऐसा बताता है कि गोलियत जो है दौड़ करके उसके सामने आया And David ran to intercept him. और दाऊद भी उसके प्रति दौड़ा। There was no hesitancy. और दाऊद के अंदर कोई भी दो विचार नहीं था। Okay. There was nothing that held him back. और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे रोका। He was clear that the battle belongs to the Lord. वो इस बात को परिपूर्णतः जानता था कि युद्ध जो है परमेश्वर का है। He was clear that he went in the name of the living God. और वो ये बात को जानता था कि वो परमेश्वर के नाम में जा रहा है। Okay. And look at his words. He said, I will strike you down. मैं तुमको गिरा दूंगा। Okay, I think verse 45, 46. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down, cut off your head. This very day I will give the carcass of the Philistine army to the birds and wild animals. He was very clear about the outcome of the battle. और दाऊद जो है युद्ध का परिणाम क्या है उसको भली भांति जानता था, पहले से जानता था। तो वो कहता है मैं सेनाओं की यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। I'll leave you with a final thought on this matter. इस बात पे मैं एक आखिरी विचार बोल करके आपको छोड़ता हूँ। Why was David confident about the outcome of the war? क्यों दाऊद इतना हियाव में था कि इस युद्ध का परिणाम यही होने वाला है? The odds were stacked against him. Here was this huge man, fully armed, fully covered. Okay, and here he had only stones in his hand. सब कुछ उसके खिलाफ था और यहाँ पर एक ऐसा सैनिक है जो कि विशाल है और पूर्णतः तैयार है, और यहाँ दाऊद है जिसके पास सिर्फ 5 पत्थर है। Contrast his reaction with the reaction of Saul and with the reaction of the other soldiers. Why didn't they get the confidence? क्यों दाऊद के पास ये हियाव था और उन बातों को देखे जो शाऊल ने कहा और जो सेनाओं ने कहा और जो दाऊद ने कहा, कितना विपरीत था। Why is it that we as believers tremble when some problem comes our way and we are fearful? क्यों हम जो विश्वासी है जब हमारे जीवन में समस्याएं आता है हम भयभीत हो जाते हैं और थरथराते हैं? Okay, the difference was a personal experience of God. फर्क जो सिर्फ इतना था कि व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ का जो संबंध है और जो एक्सपीरियंस है। David said, when a lion or a bear came to attack the sheep that was entrusted in his care, he got up and the Lord helped him rip apart that animal. दाऊद ने कहा कि जब शेर और भालू जो भेड़ उसको देखने की जिम्मेदारी दी गई उसके खिलाफ आया, तो उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दोनों को फाड़ दिया। His eyes were focused when he had to take care of his sheep. He focused on that which had to be done, and the Lord helped him. जब भेड़ों की देखभाल करने की जरूरत थी तो उसका जो आंख है वो परमेश्वर की ओर लगा था और जो करना था वही कर रहा था। When he went as a musician to Saul, he focused on his music, and God used him to rid the evil spirit that troubled Saul. जब वो गीत गायक बन करके गया शाऊल के पास, तो उसके ओर केंद्रित था और परमेश्वर ने उसको मदद किया कि उस दुष्ट आत्मा को निकाल सके। Now when this giant stood up, he knew with stones and sling and a staff he could finish Goliath. और अब जब ये दानव उसके सामने खड़ा है तो वो जानता था कि इस पत्थर और इस लठ और इस कोफन से वो इस दानव को समाप्त। He knew because God had never let him down in his life. Never. वो इस बात को जानता था क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। The problem with the others, Saul and the soldiers, was that they never had this type of a life experience. शाऊल और अन्य जो लोगों का समस्या ये था कि उनका इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। Think about the jobs that we choose. हम जो नौकरियां चुन लेते हैं उसके बारे में सोचिए। You know, I am ending my career now almost. मेरा करियर अब समाप्त हो रहा है। Okay.
David had time on his hands as a shepherd. He was also doing a job, but he had time on his hands to know God, to know Him personally, to pray, to sing about the thoughts he was having for God. But those soldiers, they also were in the army. They had to work in a different way. They had timelines to follow, what the king told, what their commanders told, and their life was drawn far from God. I'm not against jobs. I'm telling, be careful of what kind of jobs you choose. दाऊद भी एक नौकरी कर रहा था, भेड़ भेड़ बकरियों का देखभाल करता था, लेकिन उसके पास समय था परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उसके पास समय था। ये जो सैनिक थे वो भी अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था, पर इन सारी बातों में वो लगे हुए थे। इसलिए मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम कौन सा नौकरी चुन लेते हैं, जरा सचेत रहें। Both were covenant people of God, the soldiers, Saul and even David, but their responses were different because they had filled their time with things of the world, but David had things that were for God. ये सभी वाचा के लोग थे, दाऊद हो, शाऊल हो या सेना हो, सभी लोग क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था उस प्रकार का नहीं था, इसलिए उनका विचार या उनका जो एक्सप्रेशन था वो दाऊद से अलग था। Okay, so I'll wind up with that. इस विचार के साथ मैं समाप्त करूंगा। Okay, maybe Linson can pray and